Hari Bol. Hari Bol, everybody. Rahul, Hari Bol. Shovik. Hari Bol. I request everyone, please camera on कर लीजिए अपना. देखो हम भी अच्छे बच्चे. Just to say hello to everybody. We're not going to start. Yes, thank you Shovik Prabhu ji. Thank you Priyanka Mata ji. Hare Krishna, thank you so much. Priyanka, I remember you. Hare Krishna Prabhu ji. Pranati Mana. Very good. There's more here. Okay. Oh, Tiwari Rahu. Okay. So, what we're going to do here is we're going to do a little chanting. So, do you think we can do, because with this mic here, there's no lagging? Maybe it's better, huh? Good, huh? Jai Shri Prabhupada ki. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paskacha Desatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Sri Vasaji Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Shri Prabhupada ki Gaura Premanandi Jagannath Baladev Subhadra ki. Opa. Okay, just 1 minute. This is my Cyberman. Natadweep. Prabhuji, please mute your mic. Natadweep, I'm in the middle of the class now. I'm in, send me Narayan's phone number, will you? later. I'm in the middle of a class now, my podcast. Okay, partner. Yes, I'm podcasting. So I tell you later, okay? No problem, Guruji. Ali Bol. Tell me later. Okay. I talk Skal because he's the podcast Maharaj in Mayapur. And I did some podcasts with him. He's a wonderful devotee, Antadweep. He has a whole room with technicians, everything, to do many things in the in the podcasting type of thing, a lot of things. And I'm planning with him a few things, like that, like cooking class, and stuff like that. Anyway, just another story. Sorry about that. Okay. Tell me, Prabhuji, you were saying something? Yes, Prabhuji. Okay, so today class is present by Bhakti Force, and today topic is Homan, the CEO of the house. And आज का जो सेशन है वो अच्छा सॉरी कंटिन्यू. And today class given by His Grace Bhagavatamrta Prabhu, and will translation Prabhjit Mataji. हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में. आज का जो सेशन है वो भक्ति फोर्स द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका टॉपिक है वुमेन द सीईओ ऑफ द हाउस. एंड ये जो स्पीकर है वो है हिज ग्रेस भागवतमृता दास प्रभु जी, जो कि श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल हैं. And Bhakti Force leading by Isha Priya Keshavi Mataji, and the Bhakti Force under prayer and praise group.
एंड और ये जो भक्ति फोर्स ग्रुप है वो प्रे एंड प्रीच के अंडर है। Okay, thank you, all devotees, for joining today's session. आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए। Prabhuji, you must start. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. I want to thank you, everybody that comes in here, our little family. Growing. मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। आप सब नए बच्चे हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं इस भक्ति में, आप सबका स्वागत है। Right? All the bachas. We all bachas of Prabhupada. हम सभी बच्चे हैं श्रील प्रभुपाद के। Also, I start today with my new camera. We make some technical what you call support, advancement with the new camera by Sorav and Gorav. They gave my the hint, so that's good, and we're improving in that part too. English meeting. हरिबोल, किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। Okay. प्रभु जी कह रहे हैं कि आज उनके पास एक नया कैमरा है जो कि वेब कैमरा है, जो उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और इसमें गौरव प्रभु जी का और सौरभ प्रभु जी ने उनको आइडिया दिया ये करने के लिए। एंड यस, So I'm going to start here something interesting, but I just let you know that I'm very happy to see growing. We are growing in many different directions, and that's a very good thing. आज इस क्लास में सब ज्वाइन हुए और आप सब लोग ग्रो कर रहे हैं, इससे प्रभु जी बहुत ज्यादा खुश हैं और उन्हें ऐसे ग्रोथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। Each one of you growing in your heart, desire to serve Lord Chaitanya, to serve the movement of Srila Prabhupada, and I see some good results in there. आप सब लोग जो हैं वो आप अपने हृदय में जो हैं ग्रोथ कर रहे हैं अपनी धीरे धीरे, और इससे आप चैतन्य महाप्रभु के मिशन में, श्रील प्रभुपाद के मिशन में आगे बढ़ रहे हैं, और इससे आप में एक भावना जो है जागृत हो रही है सेवा करने की। Like, I think my first podcast, I think I did from my phone, and then the computer came in, then now there's a camera, beautiful image, and then I'm going to have the microphone table. I'm going to have my station here in the back, in the room in my house. Things are moving, and this is all for the pleasure of Lord Chaitanya. सबसे पहले प्रभु जी के पास मोबाइल फोन था, प्रभु जी, what did you say that earlier? I What did start you with have? the phone in the hand. yes. तो जो प्रभु जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने मोबाइल फोन से शुरू किया, फिर कंप्यूटर आया, फिर लैपटॉप उनके पास आया, फिर उनके पास धीरे धीरे उन्होंने मतलब ऐसे जो भी उनकी ग्रोथ हुई है ये टेक्निकलिटी में, तो ये सिर्फ और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु को प्लीज करने के लिए किया, उनको खुश करने के लिए किया है। So just a little bit of a fun thing. This first time I see myself giving a podcast and I see my image. It's like the first time the man, so fire, we discover fire. तो प्रभु जी बहुत खुश है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी जो इमेज है, जो फोटो आपको दिख रही है आज की क्लास में, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है इस चीज से। So, it's like a discover of fire. So, and then I see like Prabjot Kaur, wonderful Mataji. She was a little shy in the last podcast, and now she's just flowing now. And I'm seeing that is, Krishna is touching her heart, and it's everybody also. Everybody is advancing, it's getting comfortable with Krishna, and that's very nice thing. प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभजोत कौर माता जी जो है पहले सेशन में थोड़ी नर्वस थी, बट अभी वो ठीक ठाक कर रही हैं, अच्छा कर रही है। तो ये है कि कृष्णा जो है उनके हृदय में उनकी हेल्प कर रहे हैं, और ऐसे ही आप सबकी भी हेल्प कर रहे हैं वो आप सबके हृदय में। So now I'm going to start by asking
who in this, how many see I have? Okay, we have 15 participants. Okay, who in this group is Opa? Who in this group is married? And yes, or who is not married? Well, who is married? Prabhuji, your microphone. My father is talking. Actually, I'm just telling him that I'm giving that I'm translating. Please don't make noise. Oh, Yes, Prabhu. is Just your give me father 1 upset? second. No. He's not upset. He's talking to my brother. Actually, we are sitting in the Telling same the room. brother not to make noise. Yes, he's actually watching mobile phone. So my father is saying him that don't watch phone. He's holding him. That's the Very good. reason. Give you my warm welcome to your father, please. Yes, Prabhuji. And okay, Thank you. so Yes. where was I? Okay, we remember I was working Korea, South Korea. Okay, let me ask, who is married here? Who is married? Any one of you is married? आज के सेशन में कौन है जिसकी शादी हो चुकी है? कोई है तो प्लीज. Very good. But because if you're not married, many of you will be married, men and women. It's it happened. So I'm gonna keep that in mind. So we're gonna go to our little podcasting here. Yes, Mata, please. Yes, Prabhuji. Would I carry on? Yes, Prabhuji. Yes. Okay. So I was in South Korea, and I used to go in the streets, and we raise a lot of donations from Mayapur and from the school here in Mayapur. We are supporting 100 children at one time. प्रभु जी जब साउथ कोरिया में थे तब वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो वो रेस करते थे जो पैसे थे वो मायापुर से रेस करते थे और प्रभु जी व्हाट डिड यू से आफ्टर मायापुर दैट you used to raise money from Mayapur. We support Mayapur school, the Bhakti Vedanta National School. We at one point we had 100 children. We paying the school fees. Me and my wife. तो प्रभु जी जो है तो फिर ऐसे मायापुर इंस्टीट्यूट की वो हेल्प करते थे और इसमें 100 से भी ज्यादा बच्चों की उन्होंने हेल्प की है इन एजुकेशन में पढ़ाई में. They were local Bengali boys, very smart kids actually. वहाँ बहुत सारे बंगाली बच्चे थे तो बहुत ही ज्यादा सभी बहुत समझदार बच्चे थे, स्मार्ट थे. Actually, 2 of those boys, because of good guidance from my wife, they were accepted in IIT school in India. IIT, वाह. तो जो वहाँ पे 2 बंगाली बच्चे थे जो कि माता जी की परिपूर्ण माता जी की गाइडेंस की वजह से आईआईटी में सेलेक्ट हुए थे. Okay, so we were in Korea, we're doing our work, and many times we meet young women, young married women, right? And we show our programs, like that. They would give donation like that. तो प्रभु जी जब साउथ कोरिया में थे तब वो बहुत सारे ऐसे माता जी से मिलते थे जो कि न्यूली मैरिड थी या फिर यंग थी बहुत ज्यादा, तो फिर वो उनको उनसे मतलब वो उनको अपना प्रोग्राम जो है वो प्रेजेंट करते थे, प्रस्तुत करते थे, तो फिर वो डोनेशन देते थे उनको ऐसे. And many times I would ask the lady, what do you do? What kind of work you do? तो प्रभु जी वहां पे बहुत मतलब जो लेडी होती थी, उन माता जी होते थे, उनसे पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं, आप And she क्या would be a काम कर little, रहे हैं बेसिकली. and these were young women, and they would feel a little shy to tell that, I'm a housewife. They feel a little down because I just work at home. प्रभु जी बोल रहे हैं कि जो माता जी थे अगर वो उनसे पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा शर्म महसूस करते थे अगर वो घर में काम कर रहे हैं, वो एक हाउस वाइफ हैं. Because in Korea now men and women they work, and it's a very stressful
society in terms of corporation and working in going to the positions of in the company, in all these things. It's a housewife, it just doesn't have much much power in that. तो जो कोरिया में ऐसा है कि कोरिया में जो मेल जो पुरुष और स्त्री हैं जो कि शादीशुदा हैं, अगर नहीं भी हैं तो भी वहां पे पुरुष और स्त्री दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही कोई ना कोई पोजीशन पे हैं। तो जो हाउस वाइफ होती है वहां पे, तो उसकी कोई भी एज सच कोई उनके पास पावर नहीं है, कोई उनके पास कोई खास पोजीशन नहीं है। So when she would say, I'm a housewife, I would say, oh, you are CEO of the house. See? तो प्रभु जी जब कोई माता जी प्रभु जी से बोलते, जैसे प्रभु जी पूछते हैं तो माता जी अगर बोल रहे हैं कि मैं हाउस वाइफ हूँ, तो प्रभु जी बोलते थे, ओ तो आप सीईओ हैं घर के, अपने घर के। CEO. सीईओ। CEO means Chief Executive Officer. It's like it is, you are the big boss, essentially. तो सीईओ का अर्थ इंग्लिश में तो बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बट हिंदी में हम इसे कहेंगे कि वो अपने घर की जो है मुख्य ऑफिसर हैं, बेसिकली जो सब कुछ हैंडल करती हैं, बिग बॉस। सो शी इज द बॉस ऑफ द हाउस, बॉस है घर की। And when I would say that, they would open up with a big smile. They'll be so happy. तो प्रभु जी जब उनको ऐसा बोलते थे तो वो उनके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान आ जाती है और फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं ये सुन के। But now we're going to study that, and we're going to see that this is not a sales pitch to get a donation. This is true. ओके, तो ये जो प्रभु जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारी सेल्फ पिच नहीं है डोनेशन लेने के लिए। प्रभु जी This व्हाट is डिड यू से? true. तो ये सच है। यस, ये सच है कि जो स्त्री होती है वो घर की सीईओ होती है। Because if you analyze the work of the women in the modern society, you can see that she is operating a small enterprise called home. तो जो स्त्री है वो क्या कर रही हैं, अगर देखा जाए तो वो अपने घर को संभाल रही हैं। तो वो क्या है, एक स्मॉल कोऑपरेटिव काम है उनका, मतलब बेसिकली उनका जो हाउस है वो एक स्मॉल कोऑपरेटिव हाउस है जहाँ पे वो मेन लीड है। She has many functions that are keen to managing a big corporation just in a small scale. प्रभु जी प्लीज कैन यू रिपीट? She has many functions. Just like it's a big corporation in a small scale. तो जो एक स्त्री का घर होता है वो एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन की तरह अगर हम लेते हैं, तो वो जो स्त्री है तो उनके पास उनके जो है बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। There is leadership and management in the house. जो कि लीडरशिप है और क्या है, मैनेजमेंट है घर में। For a devotee, and many of you, that is, you have to balance tradition with modern responsibilities. तो यहाँ पे बहुत सारे जो हैं, तो हमें कैसे चलना है, हमें बैलेंस करके चलना है ट्रेडिशंस को मॉडर्न जो है सिविलाइजेशन के साथ मैनेज करके चलना है, बैलेंस करके चलना है। The balance. That is decision making and problem solving for the family. जो कि क्या है कि हमें अपने जो है डिसीजंस हैं, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए सही से, कि हम अपने सही से डिसीजन ले पाए। और प्रभु जी व्हाट डिड यू से? डिसीजन मेकिंग है Problem solving. ओके यस, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हम कैसे किसी भी प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन निकाले। तो ये दो मेन क्राइटेरिया हैं जिसको हमें लेके चलना है अपने घर के लिए। So I'm speaking of women, CEO of the house, but this is not just for the women, it's for the man too. तो ये जो है कि हम कह रहे हैं कि वुमेन जो है, जो एक स्त्री है वो घर की सीईओ है, बट ये एक स्त्री के लिए नहीं है, ये पुरुष के लिए भी है। Because if the man understand the CEO of the house, the business will run smooth, we will flow Yes. nicely.
तो अगर जो पुरुष है घर का, अगर वो ये समझेगा कि मतलब अगर वो समझेगा तो ये जो उनका घर है वो फास्टली स्पीड से ग्रो करेगा और बहुत अच्छे से चलेगा सब कुछ उनके घर में. So it's important for the man to understand the CEO of the house. So because it's his business too. He's a partner on that business. तो एक पुरुष को समझना होगा कि सीईओ जो है वो अपने घर मतलब कैसे हेल्प करेगा, ताकि क्योंकि वो भी उस घर में रह रहा है तो उनका भी इक्वली हिस्सा है उस घर में, तो दोनों को साथ में मिलके चलना पड़ेगा. So there is certain areas that the women, they have to manage. For example, the relationship with the husband. तो जो स्त्री है उनको बहुत सारी चीजों पे काम करना होता है, जैसे कि सबसे पहला तो यही है कि उनको अपने हस्बैंड जो उनका पति है, पति के साथ भी एक रिलेशनशिप है, उसको भी सही से रखना होता है. Because in this business, which is based on love, you see, the husband is an important part. It's one of the pillars. So there's two partners, okay? So they have to have a relationship that is based in mutual respect. तो घर में एक जो हस्बैंड और वाइफ का एक रिलेशनशिप जो होता है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे होना चाहिए, तभी वो दोनों साथ में मिलकर चल सकते हैं. I was a small child. Even as a young teenager, my mother always, Guru Pitta Matadeva. You see, my mother used to say, you don't hit the women even with a flower. तो प्रभु जी कह रहे हैं जब वो छोटे थे तो प्रभु जी, यू सेड योर मदर राइट? My mother, yes. यस. तो जो उनकी मदर है तो वो कहती थी कि आप एक स्त्री को किसी फूल से भी नहीं मारिए. And this, my mother she has the wisdom. She was a CEO of the house, really. तो जो प्रभु जी की माता थी तो वो रियल में सीईओ थी ऑफ द हाउस. यस, शी वाज. Yes, and this is, it went to my, mental formation. ओके. तो ये जो है प्रभु जी के मेंटल फॉर्मेशन में था, शुरू से ही, मतलब कि उनके संस्कारों में था ये. So for the man in here, I'm not a mother. I will be your Pitaji today. I'm gonna tell you, don't hit the women even with the flower. With reason or without reason, don't hit the women. एक पुरुष को ये समझना चाहिए कि चाहे आप कोई भी है, आप किसी भी स्त्री को नहीं मार सकते, चाहे वो एक फूल से भी क्यों ना हो. You see, so this relationship with the husband is a partnership based in mutual respect. तो ये जो रिलेशनशिप है ये हमेशा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेसिस पे होना चाहिए, सम्मान के बेसिस पे होना चाहिए. Okay? Because the husband may be the CFO, Chief Financial Officer, and the woman is CEO, Chief Executive. She's execute. The man is the finance, the execution. तो जो एक घर में जो पुरुष होता है वो होते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ, जो कि घर के जो भी फाइनेंसेस हैं उनको कंट्रोल करते हैं. बट जो एक वाइफ होती है, जो एक पत्नी होती है, वो सीईओ होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि सब कुछ घर में एग्जीक्यूट करती हैं, सब कुछ करती हैं एक्चुअली घर में. But sometimes it's different. The man, he stay at home, the women's working, it doesn't matter. It's a partnership and has to have mutual respect and agreement. इस अगर स्त्री बाहर काम कर रही है और पुरुष घर पे है तो भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो भी जो रिलेशनशिप है वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए, एक दूसरे को सम्मान करते हुए ही एक जो है रिश्ता होना चाहिए कोई भी. So, as a good CEO, the women, she puts support the role of the husband, and she support each other's responsibilities. You see?
तो जो पत्नी होती है वो अपने पत्नी सीईओ है घर की, तो वो अपने पति को हर एक तरीके से सपोर्ट करती है। Then there is other roles, because the women is like a hat. She used different hats. She is the teacher, she is the educator, she is the nurse. तो जो एक पत्नी होती है वो डिफरेंट कैप्स पहनती है, डिफरेंट कई तरीके की टोपियां पहनती है। जैसे कि कई बारी वो टीचर बन जाती है, वो शिक्षक बन जाती है, कई बारी वो एजुकेटर बन जाती है, और कई बारी वो नर्स बन जाती है। तो ऐसे वो कई तरीके की टोपियां पहनती है। She's a counselor. She is giving the wisdom to the children. She gives good advice to the husband. She's the good side of the husband. कभी वो कई बारी वो काउंसलर बन जाती हैं अपने बच्चों के लिए। उनको क्या देती हैं, बहुत सारी अच्छी नॉलेज देती हैं ताकि उनके बच्चे जिंदगी में अच्छा करें। और कभी वो अपने पति की एक अच्छी साइड बन जाती हैं, पति को सपोर्ट करती हैं बहुत अच्छे से। So just like Prabhupada, when he started ISKCON, he was in New York. He didn't ask very much from the devotees. He asked them to chant Hare Krishna. He used to cook the prasadam for the devotees. The devotees didn't know anything. So, they eat garbage in the street. So Prabhupada, in his infinite wisdom, he was cooking for the devotees. प्रभुपाद ने जब इस्कॉन शुरू किया तब प्रभुपाद के पास जितने भी भक्त थे, तो प्रभुपाद ने उनको कुछ भी ज्यादा करने के लिए नहीं कहा। प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप चैंटिंग कीजिए, और प्रभुपाद खुद उनके लिए प्रसादम बनाते थे। वो बाहर से कुछ भी खाते थे, गार्बेज या कुछ भी, तो प्रभुपाद उनके लिए खुद पूरा प्रसादम बना के उनको पवाते थे। Prabhupada, one time, he saw the devotee cleaning the floor. He has the brush going everywhere. He said, no, this is not how you do it. तो प्रभुपाद ने देखा एक भक्त को सफाई करते हुए एक ब्रश के साथ, मतलब झाड़ू के साथ, तो ऐसे क्लीन कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने उनको रोका और बोला कि ये ऐसे नहीं करते हैं। So Prabhupada, he lifted his dhoti, he went to the knees in the floor, he took the cloth and he said, like this, you go around, you do this area, then you go around here, you go this, like every in the house, they mop the floors like with the hand in the circular motion, like that. तो प्रभुपाद ने उनको बताया, प्रभुपाद ने अपनी धोती थोड़ी सी ऊपर उठाई, तो फिर उन्होंने कपड़ा लिया और कपड़ा मार के बताया कि कैसे बोले, सर्कुलर मोशन में उनको बताया कि ऐसे करना है, फिर इस कोने में मारना है, फिर ऐसे करना है। तो उन्होंने पूरा अच्छे से उनको बताया। So Prabhupada was like the mother for the devotees. You see, he was Pitaji and Mataji. तो प्रभुपाद जो है वो उन भक्तों के लिए पिता के समान थे, पिता की तरह उनको गाइडेंस दे रहे थे। तो प्रभुपाद उनके लिए माता भी थे और पिता भी थे, दोनों ही थे। The fact is, he was the CEO of the International Society for Krishna Consciousness. तो जो प्रभुपाद थे, प्रभुपाद जो है वो है सीईओ है फॉर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए। And he would take any position in the society to advance the society goals. तो प्रभुपाद जो है वो कोई भी पोजीशन ले लेते थे सोसाइटी में कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करने के लिए, ग्लोरीज को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए। He was preaching, giving, classes. He was cooking. He was teaching the devotees how to clean the pots, how to keep everything clean. He was distributing books. People would come, Prabhupada would sell his books. You see, like that. He did everything you do as a devotee, Prabhupada did first. तो प्रभुपाद जो है वो सब कुछ करते। प्रभुपाद प्रसादम भी बनाते थे, प्रभुपाद बताते भी थे कि कैसे सफाई करनी है। प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जाते थे, प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे, प्रीचिंग भी करते थे, सब कुछ करते थे। तो प्रभुपाद जो थे वो फर्स्ट, मतलब सबसे पहले वो करते थे सब कुछ। So back here, the women being CEO. See, being CEO means you take different roles
to make your enterprise function and prosper. तो हम वापस इस टॉपिक पे आते हैं कि जो स्त्री होती है वो सीईओ होती है घर की। तो जो एक स्त्री होती है वो अपने घर में बहुत सारे जो है कि रोल्स प्ले करती हैं ताकि उनका जो एंटरप्राइज है वो बहुत अच्छे से चले। So the important thing we already said, relationship with the husband, partnership and mutual respect. You see, so because this is the two pillars, otherwise how can the CEO function? You need this partnership, right? तो हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं कि जो हस्बैंड है वो भी इम्पोर्टेंट है इस एक रिलेशनशिप में कैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए और अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए एक पति और पत्नी के बीच में, तो वो एंटरप्राइज जो है वो बहुत अच्छे से चलेगी। Prabhuji, what did you say after enterprise? Means they both working in a partnership and mutual respect. To make the enterprise, the home, prosper. Yes, I said that. Okay. Yes, because it said the women, the wife, she's the Lakshmi in the house. क्योंकि जो एक स्त्री है, जो एक पत्नी है उस घर की, तो वो लक्ष्मी है घर की। Yeah, but don't ask money from Lakshmi. You have to give money to Lakshmi. Sorry. But तो आप लक्ष्मी जी से लक्ष्मी मत मांगिए क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मी है घर की। But you see, she takes the money and she save. I know every Indian wife, they have a little pot. They put the money husband give, they make a little savings for the rainy day. It's called for the rainy day, which is okay. It's nice. It's fun. तो जो पत्नी होती है जो उनको जो भी पैसे मिलते हैं तो उससे वो कुछ ना कुछ सेविंग्स करती हैं, तो कि ये बहुत अच्छी बात है, तो जो कि आपके बुरे दिनों में भी कई बार काम आते हैं, जिनको प्रभु जी ने रेनी डे कह करके बोला है यहाँ पे। So for the future wives out there, you should have a little box that you put your money. But when your husband is in need, you say, Prabhu, here is, there's 10,000 rupees here you can use. Where do you get the money from? You save it, little bit by little bit. And it's happened, my wife is expert in that. But, it's a good thing. Wow. Yes. Yes, प्रभु जी। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे हैं, जो भी फ्यूचर वाइफ हैं, तो वो भी ऐसे धीरे धीरे जो है पैसे बचाने की कोशिश कीजिए ताकि बाद में आप गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तो फिर आपके पति आपको जो पैसे देंगे आप भी बचाइए, और फिर अगर आपके पति को कभी जरूरत पड़े तो आपको पैसे जैसे 10,000 हो तो आप दे सकते हो, तो आपका पति पूछेगा ये कहाँ से है, तो आप बोलिए कि हाँ मैंने सेविंग्स करके रखी थी ऐसे करके, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो ऐसे। But don't go around telling Bhagavatamrta giving class, telling the wife to steal from the husband. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसा मत बोलिएगा कि प्रभु जी ने ऐसा कहा है, ऐसा सिखाया आपको क्लास में कि हाँ पैसे आपको ऐसे बचाने हैं। Okay, this is just because the women as Lakshmi, they like to be near money because they feel security. Simple as that. तो जो स्त्री है, जो पत्नी होती है, अगर वो पैसे बचाती हैं तो फिर उनको लक्ष्मी कहा। प्रभु जी, कैन यू रिपीट? दे आर सिंपली टॉकिंग। So is that your father there? It's my brother. Let me lock the door only. They're simply creating nonsense. Tell him I love him. Don't worry. I'll send him a rasgulla. Yes. You see, this is life. And it's a beautiful thing. Prabhuji. Yes. I've scolded him badly. I just hope now he doesn't do that. Don't worry. How old is your brother? Prabhuji, he is 19 years old. Okay. I'll send him a samosa or something. Yes, Prabhuji. So the women, she's as Lakshmi, she likes to be near money because she feels secure. The man should understand that, and the women should understand this is her nature.
तो जो एक स्त्री होती है कि उनको लक्ष्मी बोला गया है क्योंकि उनको पैसों के पास रहना अच्छा लगता है, पैसों के पास रहते हैं क्योंकि लक्ष्मी बोला गया उनको, तो एक पुरुष को ये चीज समझनी होगी। So the other thing is, when there is marriage, there is children, Prabhupada said. So she is the one who generally will manage the children to a certain extent. Prabhu ji, I didn't hear properly. One second. When there's marriage, there is children, Prabhupada said. So the women should be one of their responsibilities. Generally, she takes charge of the children. You see, children needs. Yes. तो जो एक स्त्री है जब वो गृहस्थ आश्रम में जाती हैं तो उनके पास जब बच्चे होते हैं तो वो प्रॉपर जो अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हैं अपने बच्चों की और सबका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती हैं। You see, she is nurturing the children, emotional and intellectual growth. तो वो अच्छे से जो है अपने बच्चों को नर्चर कर रही हैं, उनको अच्छे से ग्रोथ करने में उनकी हेल्प कर रही हैं। She established the discipline. You all have mothers and you know how they discipline. Even today, she's disciplining you in so many ways and setting household rules. Yes. तो जो माता है वो अपने बच्चों को अच्छे से डिसिप्लिन करती हैं। तो जो माता है वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से डिसिप्लिन करती हैं ताकि फिर मतलब जैसे हम आज अपने घरों में भी देखते हैं तो जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से डिसिप्लिन करके रखती हैं। And they also, generally the women, they monitor the education, whatever the education home or in the school, particularly in the Indian families, the education is very important. So they're monitoring that to see that the child is doing good. तो जो माता है वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती हैं। इंडियन स्कूल्स में हो या फिर इंडियंस बहुत ज्यादा इस चीज पर ध्यान देते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में अच्छा करें। Because the home is an enterprise. क्योंकि जो वो घर है वो एक एंटरप्राइज की तरह है। It has so many aspects, you see. उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। And the women play a pivot role in this prosperity of this enterprise. तो जो एक पत्नी है या स्त्री है घर की, तो वो इस जो है एंटरप्राइज में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले कर रही हैं। She also oversee the household staff. वो घर का जो हाउस होल्ड स्टाफ है उसको भी देख रही हैं। Some of you may have like a maid, some of you are the maid, but but she supervises the children to do chores. यस, तो जो स्त्री है वो देखती है घर पे अगर कोई मेड सर्वेंट है, कोई नौकर है, किसी किसी के घर में होते भी हैं और किसी के घर में वे स्वयं ही नौकर होते हैं, खुद ही घर का सारा काम करते हैं, तो वो सब कुछ देख रेख करती हैं। She delegates and supervises. वो सब कुछ सुपरवाइज करती हैं, सब कुछ ध्यान में रखती हैं, जो भी घर में चल रहा है सुपरवाइज करती हैं। Delegates means she gives people chores to do and the expectance to accomplish a certain goal. तो डेलीगेट का अर्थ है कि वो घर में काम देती हैं, जैसे बच्चों को भी देती हैं या किसी ना किसी को, मेड सर्वेंट हो सकते हैं, किसी को भी देखती हैं, तो अच्छे से देखती हैं कि वो कार्य उन्होंने किया है कि नहीं किया है। प्रभु जी, I couldn't understand. What did you say? Delegate Means that she to give, to give force. power to somebody to do something. Okay? Okay. Got it? Yes, so delegate का
यस, डेलीगेट का अर्थ है कि हम वो किसी न किसी को पावर दे रहे हैं कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए. For example, I hear many of the wives of my friends, well, they order milk and they have to deal with the milk wala. तो प्रभु जी के बहुत सारे मित्रों की जो प्रभु जी, you said your god brother's wife, right? Friends, some of my friends Okay. here, the wives, Okay. they order milk, they have to manage the milk wala. Okay. तो प्रभु जी के बहुत सारे मित्र हैं, तो उनकी जो पत्नियां हैं तो वो मिल्क ऑर्डर करती हैं, तो उनको डील करना पड़ता है मिल्क वाला के साथ. दूध. Yes. Because Milk. just this, ordering milk is a whole universe. जैसे कि ये मिल्क ऑर्डर करना ही सब कार्य हो उनका, होल यूनिवर्स, इट इज लाइक, मतलब पूरा यूनिवर्स की तरह है. It's a whole thing. Because you have to see the guy is bona fide, you have to see the guy is getting milk from his own cows, not buying the milk in the market and give it to you. And you have to see he's not mixing water in the milk. तो जो भी मिल्क लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत ध्यान रखना है कि जो मिल्क है वो काऊ से ही आ रहा है, वही गाय से ही आ रहा है, ना कि कोई ऐसी जगह से जहाँ पे जो दूध है उसमें पानी जो है वो मिक्स किया जा रहा है. By the way, they have a laboratory. You go there and you get something that you put in the milk. It tells you how much water the milk have. See, the women here is very smart. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि लेबोरेटरी में जैसे कि एक टेस्ट होता है, जिससे कि हम अगर उसमें पानी डालते हैं दूध में, तो इससे पता चल जाता है कि उसमें कितना पानी का कितनी मात्रा है उसकी पानी की. You see, it's just one thing, and you have to be smart about just ordering milk. You have to be smart about everything. So the women become very expert in doing things, running the house. तो ये सिर्फ एक दूध ऑर्डर करने की ही बात नहीं है. तो मतलब जो एक स्त्री है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाती है हर एक काम को करने में. तो ऐसे ही वो अपना जो है घर उसको रन करती हैं, उसको चलाती हैं. Which I think all of you will be. You'll be expert in managing your household affairs. तो यहाँ पे जो भी हैं, तो इसी तरह से वो भी अपने घर को मैनेज करने में प्रॉपर एक्सपर्ट बन जाएंगे. So then there is another area of house management. And generally the women does that, is accounting and cash flow management. Account, how much money coming in, how much money going out. See, the money coming in, that's the husband, generally. He's the CFO. He puts cash into the system. And she is aware of, where the money is coming, what it's going, how it's going to be the cash flow in this enterprise called home. तो जो पति हैं वो CFO जरूर हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. तो वो क्या करते हैं, एंटरप्राइज जो है जिसको घर बोल रहे हैं हम यहाँ पे, तो पति जो है वो उस एंटरप्राइज में पैसे डाल रहे हैं. तो जो पत्नी है, क्योंकि वो CEO है घर की, तो फिर वो सारा पैसों का ध्यान रखती हैं कि पैसे कहाँ पे यूज हो रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, कैसे कहाँ पे लग रहे हैं, यूज हो रहे हैं. तो वो पूरा ध्यान रखती हैं. You see, so there is also, she does the budgeting for the house, and then she planning savings and investments. Savings, this is part of this is a part of a household that, you should have a savings for everything that's coming in the future, like children's school, retirement accounts, emergencies, all these things. So the wife, he is the good heart of the husband that helps him plan these things. तो जो पत्नी है वो
जो भी पैसे आ रहे हैं तो उनको वो अच्छे से संभाल के भी रखती हैं, उनकी सेविंग्स भी करती हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी उनको बचा करके रखती हैं ताकि कल को कभी जरूरत पड़े तो वो यूज कर पाए उसको। और वो अपने पति की गुड हार्ट भी बनती हैं, मतलब कि उनकी हेल्प करती हैं हर एक चीज में। It's said that in Kali Yuga, to be a successful householder, it's very hard. It's so degraded, it's very difficult. तो इस कलयुग में बहुत मुश्किल है एक अच्छे पति और पत्नी बनना, और अच्छे से अपने घर को चला पाना बहुत मुश्किल है इस कलयुग में। So these things help us to navigate through these different situations. तो ये जो है इसके थ्रू हम नेविगेट कर सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। So the women also, she strives to be a role model in faith and character, in dharma. She is what, Prabhuji? She should be a role model. Model. Okay. Faith and character, a dharmic woman. Now we get to a real point of the women in the house. कि जो एक स्त्री होती है कि Prabhuji, I couldn't get it. Role model Okay, in okay. faith. I forgot. Yes. तो जो स्त्री Faith होती and है वो character. घर Dharmic. She is the role model of a dharmic woman. Okay. तो वो जो है, जो घर की स्त्री है, घर की पत्नी है, तो वो एक रोल मॉडल की तरह बन जाती हैं। धार्मिक जैसे कि धार्मिक एक स्त्री को कैसे होना चाहिए तो वैसे ही बन जाती है बिल्कुल। You see, so this is now the secret point of the women as the CEO of the house, because we talk about materialities. You see, she managed this, she managed that. That's the help, that's the husband, that's the budget, that's the money coming out. Now comes to her main focus of the women in the house is her dharmic position. तो अभी तक हमने जो भी बात की तो ये सब क्या थी, एक मटीरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव को देखते हुए बात की कि वो ये भी मैनेज करती हैं, वो सब कुछ ध्यान रखती हैं, सुपरवाइज करती हैं सब कुछ। बट अब हम मेन पॉइंट पे आएंगे कि वो कैसे एक धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे देखते हैं उनको, कैसे वो मतलब कि वो परफेक्ट हैं धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। The religious wife. यस, रिलीजियस वाइफ, कैसे वो एक रिलीजियस वाइफ है, धार्मिक पत्नी। Dharma Patni. Very good. So this is religious wife. We're going to discuss the chastity of the women. And this is her superpower, her mystic power. तो अभी हम बात करेंगे उनकी चैस्टिटी के बारे में, यानी कि उनकी पवित्रता के बारे में, जो कि उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। In the West, they think chastity is the women, they're going with other men and all these things. Chastity, according to Narada Muni, is a little bit different. वेस्ट में चैस्टिटी का मतलब है कि एक स्त्री जो है वो किसी भी पुरुष का संग कर सकती हैं, बट ये सत्य नहीं है। नारद मुनि के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Of course, women should be chaste towards the husband. Okay. But we want to discuss something even deeper regarding to chastity. हम देखते हैं कि पत्नी जो है एक पतिव्रता होती है, ये सत्य है, बट अभी हम चैस्टिटी का कुछ और मतलब भी देखेंगे। Women chastity, she should be in good disposition. Good disposition. You know this word, good disposition? Very important because disposition, I don't know how to say in Hindi, Prabhuji. Yes. Anybody can help in here? Good disposition.
I should have my translating here. Anyway, she's in good. अरे बोल प्रभु जी, Yes. माता जी, disposition में स्वभाव, स्वभाव. Okay, स्वभाव, Wow. behavior. Thank you. Okay, so she's in good disposition towards the husband. She's in good disposition towards the family of the husband. And she's in good disposition towards the friend of the husband. These three things. Yes. तो जो एक पत्नी का अच्छा स्वभाव होना चाहिए अपने पति के प्रति, अपने पति की फैमिली के प्रति, जो भी उनकी फैमिली है, उनके पति के दोस्तों के प्रति, सभी के प्रति उनका एक अच्छा स्वभाव होना बहुत ही आवश्यक है. Okay, you said it. Okay, so the wife is always in not jolly mood, but she's always in a good spirit towards the husband, and good spirit towards the family of the husband, and good spirit towards the friends of the husband. You see, and she's irradiate that good spirit. तो जो पत्नी होती हैं कि हर मतलब वो जॉली मूड में तो होती हैं, बट वो एक अच्छे स्वभाव के साथ, अच्छे what did you use that she is in good spirit. Okay. तो वो एक अच्छी स्पिरिट के साथ, अच्छे स्वभाव के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ जो है अपने पति के साथ, अपनी पति की फैमिली के साथ, पति के दोस्तों के साथ, सभी के साथ एक अच्छा स्वभाव रखती हैं. Because the husband, he comes home and he has a lot of things in his mind. He's thinking financial, he's thinking his business, he's thinking on his the exterior part. And when he comes home, the home is his refuge, his shelter. Home is his shelter. So when he meets his wife and she's smiling, good spirit, he enliven his heart, and immediately he forgets all his problems. Yes. तो जो जब पति है, जब वो घर पे आते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, जैसे फाइनेंसेस को लेकर के या कोई भी और चीज हो सकती है. तो फिर जब वो अपनी पत्नी से मिले, तो जो एक पत्नी है, उनको गुड स्पिरिट के साथ, गुड एनर्जी के साथ, गुड बिहेवियर के साथ अपने पति के साथ मिलना चाहिए, और उनकी जो एनर्जी है या उनका जो हृदय है, उनको एनलिवन कर देना चाहिए, मतलब कि खुशी से भर देना चाहिए. So, and a little bit in the last, because we get into the point of being finishing this. Okay, so the dharmic women is the linchpin of the house enterprise. The dharmic women, a devotee women, practicing devotional service at home. Prabhuji, you said Linchpin. Linchpin is like the where everything rests. That is the linchpin. You see, it's a pivot. Okay. Okay. Yes. तो जो एक धार्मिक पत्नी है, या फिर धार्मिक या फिर जो कि भक्त हैं, या फिर जो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रही हैं, तो उनके ऊपर जो है पूरे घर का जो है सब कुछ उन्हीं पे ही निर्भर करता है, उन्हीं पे ही डिपेंडेंट है हर कोई. So the women, the dharmic women, the CEO of the house, she should have self-care. Should care of her devotion and personal growth in devotion. So she grows in her devotional service in the house. तो जो एक धार्मिक पत्नी है, धार्मिक स्त्री है, तो उनको अपनी सेल्फ केयर भी करनी चाहिए, उनको अपनी भक्ति पर ध्यान देना चाहिए, ताकि अपनी भक्ति. प्रभु जी, you said that she should look after her devotion, practice her devotion. Then yes, what you said? Practice her devotion. Correct. Then after that what you said? Okay, she should take care of herself personally in devotion, to protect her devotion, because all these things going on in the house, she may distract her. She should protect her devotion and continue in her personal growth in devotional service. Okay. तो उनको अपनी जो है भक्ति पर ध्यान देना चाहिए,
भक्ति में अपनी सेल्फ केयर करनी चाहिए, क्योंकि घर में भी बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, तो उनको अपनी भक्ति को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. She should balance her responsibilities with her self-development of her devotion. तो Ura. Okay, Mata? You want some water? yes, Prabhuji, one second. You have, yes, you have water with you. No. Thank you, Mata. Yes, Prabhuji. No, Prabhuji, thank you so much. Prabhuji, can you please repeat once what you were saying? I just forgot. So she should balance her responsibilities as a CEO of house with her self-development in devotional service. तो जो पत्नी है या फिर स्त्री है, तो उनको क्या करना चाहिए? अपनी बैलेंस करके रखना चाहिए, उनके घर को भी बैलेंस करके रखना चाहिए, और जो भी वो भक्ति कर रही हैं अपनी डिवोशनल लाइफ, उसको भी बैलेंस करके रखना चाहिए. उसमें भी उनको सेल्फ केयर करनी चाहिए. And the man, he should acknowledge that development in devotion. He should encourage her in her devotion. He should encourage the wife, because the wife is supporting the house and the man supports the wife supporting the house. You see, so it's a partnership. तो जो एक पति और पत्नी की जो भी रिलेशनशिप है, वो एक पार्टनरशिप है. तो पति को भी अपनी पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए उनकी भक्ति में, ताकि क्योंकि वो घर को सपोर्ट कर रही हैं, तो इसलिए उनको सपोर्ट करना चाहिए. जब अपनी सपोर्ट करेंगे तो वो अपने पूरे घर को भी सपोर्ट करेंगे. And that's a beautiful relationship, you see, and Krishna being satisfied with this devotion in this household life, because you take care of the children are little devotees, you see. So Krishna will bless and the house will prosper. तो इससे जो उन दोनों का रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और कृष्णा भी उनसे बहुत खुश हो जाएंगे, और क्योंकि वो अपने बच्चों का भी ध्यान रख रही हैं, पति का भी ध्यान रख रही हैं, और दोनों मिलके पूरे घर का ध्यान रख रहे हैं और बहुत अच्छे से चला रहे हैं. So here, this framework highlights the modern women role as an efficient manager, nurturer, and a spiritual guide in her home. You see, this is the idea. This framework highlights the modern women, because before was a little different. But with the modern life, you know, the women needs more support, particularly if she's a devotee woman. You see, they need support. तो जो एक जैसे कि कोई स्त्री है जो कि डिवोटी भी है, तो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए है अपने पति से, ताकि वो घर को भी अच्छे से संभालें और फिर वो अपनी भक्ति भी अच्छे से करें. So now, in regarding to women as CEO of the house, I speak a little bit to the men, because some men and some are like that. They understand now women follow the man. They have to follow, and this is cause a little bit of a constraint in the marriage. Prabhuji, you said that a woman should follow a man, and this is going to cause a constraint in the relationship. If the mentality of the man is just asking the women to follow, okay, without a partnership and mutual respect. Yes. तो अगर पति की जो मेंटालिटी है, जो सोचने का तरीका है, वो यही है कि जो पत्नी है उनको फॉलो करना चाहिए हर एक चीज में जो भी वो कर रही हैं, और तो इससे जो है एक रिलेशनशिप पे, दोनों के रिलेशनशिप पे बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है. Because before you ask the women to follow you, you ask yourself this question: are you leading properly? Yes. तो अगर आप कह रहे हैं अपनी
पत्नी की, वो आपको फॉलो, आपको ये सोचना पड़ेगा सबसे पहले कि आप क्या उनको लीड कर रहे हैं। Okay. Yes, प्रभु जी। Yes. Thoughtful. So the man also, he has responsibility because the man is following Krishna. The women is following the man then. It makes sense. Yes. तो जो पुरुष है वो क्योंकि कृष्णा को फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी पत्नी जो है वो अपने पति को फॉलो कर रही है, तो ये एक सेंस बना रहा है। But if the man is doing nonsense, you don't expect the women to follow him. Should not be very inspired. और अगर वो पुरुष नॉनसेंस कर रहा है, कुछ गलत कार्य कर रहा है, तो पत्नी को कैसे कह सकते हैं कि वो उनको फॉलो करें। Okay, so we want to finish the podcasting here. It's 9 o'clock now, and I'll take the opportunity to thank all of you. We're finishing here. It's no, because we may have to go down today. Today's Sunday. Today's Sunday. Today's Sunday. Yes. Yes, Prabhu. Yes. So maybe you don't have anything very important or very urgent to do. So if anybody want to stay more and ask some questions, then we can answer a few questions before we actually closing for tonight. I thank you, all of you, for coming here in this podcast. I thank Prabjot. She's wonderful, much better. See, you make advancement. Very good. And all your mercy, Prabhuji, all your mercy. Mataji's mercy, your mercy. So much mercy. Okay, flowing. Saurav and Gaur, thank you so much for this camera here. Actually, I just plug in and just came online. It's wonderful. Okay, so we'll take some questions, and yes. Okay, I think we have a problem here. Amisha Rawat, what is it? Hare Krishna Prabhuji, please explain you cannot kill a woman even by a flower. Okay, this is, I don't think I said kill, I said you cannot hit the woman. Yes. Like, you give a slap or whatever. You don't hit the women, not even with a flower. In other words, if you think you have to hit a woman to win an argument, you already lost the argument. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने कह रहे हैं कि आपने क्वेश्चन पूछा ना कि किल कर रहे हैं फ्लावर के साथ, फूल के साथ, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो किल कर रहे हैं। प्रभु जी ने कहा कि मैंने कहा कि हिट कर रहे हैं फ्लावर के साथ। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि वो एक स्त्री के साथ कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए ही बात कर रहे हैं केवल, तो वो ऑलरेडी लूज कर चुके हैं वो। Yes, because I don't see in the Mahabharata, in the Bhagavatam, any instance of a good man hitting a woman for any reason. क्योंकि महाभारत में अगर देखा जाए तो एक भी कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जहाँ पे किसी पुरुष ने एक स्त्री को हिट किया हो किसी भी रीजन की वजह से। Maybe sometimes the justification, oh, the women make me so mad, and I know you get angry and do something stupid. तो अगर प्रभु जी कह रहे हैं कि उस समय में अगर कोई पुरुष को लगे कि हाँ कि जो उनकी पत्नी है कि वो उनको तंग कर रही है थोड़ा बहुत, तो मतलब इतना कुछ नहीं होता था कि कोई उनको मारे या ऐसा कुछ नहीं होता था। We heard that it's said that the man is stronger than the women. हमने सुना है कि जो मैन है, जो एक पुरुष है, वो मतलब ताकतवर है एक स्त्री से। Sometimes the women don't like that. They become upset why the man is so better than the women. तो जो स्त्री है तो वो कई बार दुखी हो जाती है ये सुन करके, या फिर उनको गुस्सा आता है ये सुन करके कि एक जो पुरुष है वो ताकतवर क्यों है एक स्त्री से। Right? All the women out there. प्रभु जी कह रहे हैं ये सही है ना।
जो भी इस क्लास में है women. The fact is, the man is stronger than the women because he takes a lot of, what to say, it's like Lord Shiva. When Ganga came, he took the force of the Ganga into himself, so Ganga can flow to the world without any problem. तो हम यहाँ पे भगवान शिव का जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब गंगा आई, I don't know how to say it, Ganga. but I'm saying Uh, yes, Ganga, it came. Prabhuji said, you said like this night came. yeah, he came in his head. He taken his head Yes. to take the force of the Ganga. Yes, तो जो गंगा जब आई उनके जो है उनके सिर पर, तो उन्होंने उनको कंट्रोल किया, मतलब वहां पे ही रही. So the man वो is strong. Yes, finish. Yes. Man is stronger because he takes the emotional waves of the women in his head, and he takes like a man. It absorbs all. That's why he's stronger. तो जो पुरुष हैं, क्योंकि वो स्त्री Emotional waves. Yes, Prabhuji. I mean, I'm just thinking, how should I say it in Hindi? जैसे शिव जी ने, Prabhuji, can you repeat once? I just don't know how to say it. No, not that whole line which you said. Emotional. He takes the emotional waves, the power, the emotion of the women. He accepts, nagging, complaining. Women sometimes they have this, this emotional. Sometimes they get angry. He accepts that quite like Lord Shiva accepts Ganga in his head. Yes, okay, now I understood. तो जो एक पुरुष है, क्योंकि वो स्त्री के इमोशनल जो भी है उनके सिचुएशंस या जो भी है, तो उनको वो एक्सेप्ट करते हैं. इसीलिए जैसे कि शिव जी ने माँ गंगा को अपने जो है मतलब के सर पर वहां पे रखा हुआ जो भी है, मतलब जैसे भी, आई डोंट नो हाउ टू एक्चुअली से, तो क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बेसिकली मेन पॉइंट यही है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके इमोशनल वेव्स को, तो इसी वजह से जो पुरुष है वो ज्यादा ताकतवर है एक स्त्री से. यस प्रभु. So, any questions now? Do the men understand that? Do the women understand a little bit? और किसी का कोई प्रश्न है? Yes, let's go to the prashna now. Okay. I want you also to give feedback, huh? Don't forget to write. I always like to hear from you how it's not that you like or you don't like, how certain things that we can discuss in here, how they affect your and make you a better person than you were before the class. That's how it is, you see. प्रभु जी कह रहे हैं कि वो आप सबका फीडबैक चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे फैक्ट्स डिस्कस हो रहे हैं, तो आप प्लीज उनको फीडबैक जरूर दीजिए. तो उसके लिए आप सौरभ प्रभु जी को या फिर आप गौरव प्रभु जी को दे सकते हैं ये फीडबैक उनको. So here somebody is asking, what if the husband is actually on the wrong path and the wife wants the husband to be on the right path? How would the wife help him regarding that? I can tell one thing. A wife that always is by the husband, as long as the husband is not nonsense, he'll recognize that wife in the long term. अगर पुरुष गलत रास्ते पर भी है, और अगर, क्योंकि पुरुष को जो है उनकी वाइफ, मतलब कि जो एक पति है उनको उनकी वाइफ जो है, पत्नी जो है वो फॉलो कर रही हैं, तो एज लॉन्ग एज ऐसा है. Prabhuji, what did you say that she's next to the husband, she's supporting him, and support means she does her CEO duties properly. She takes care of the house, take care of the kid. If he's not a nonsense, he will recognize her. If she's a devotee also,
you recognize her. Now that's the second part. You get this part first. ओके तो प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर पुरुष सही है, अगर पत्नी जो है वो घर की, जैसे कि वो सीईओ है, तो वो घर का सारा ख्याल रख रही हैं, सब कुछ संभाल रही हैं, तो फिर जो पति है वो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा ऐसे मतलब कैसे बोलूं, देखेंगे या फिर उनको एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमेशा याद रखेंगे. And there's another part of the women, that's the prayer. You see, a woman that's chaste and is devotee, she prays to Krishna, she prays to the Lord. Please give me inspiration to my husband. You see, it's an incessant prayer. It don't stop. The wife is always praying for the benefit of the husband. तो जो एक पत्नी है, अगर उनके पति गलत रास्ते पर भी हैं, तो भी जो पत्नी है वो अपना डिवोशन नहीं छोड़ती हैं, अपनी भक्ति नहीं छोड़ती हैं, और वो अपने पति के लिए हमेशा प्रे करती रहती हैं कि वो सही रास्ते पर आए. Because prayers work, I can tell you. Prayers work. It's like SMS to Krishna. तो जो प्रेयर्स हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, वो बिल्कुल काम करती हैं. तो ये जो है प्रार्थनाएं जो होती हैं वो एसएमएस की तरह हैं कृष्णा को. जो हम एसएमएस, जैसे हम किसी को एसएमएस करते हैं, तो वो भी वैसे ही है कि हम जो हमारी प्रार्थनाएं हैं वो एसएमएस की तरह काम करती हैं, जो कि हम कृष्णा को करते हैं. So you have to be patient. तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं हिंदी में, If your husband, धैर्य. हाँ जी, धैर्य धैर्य धैर्य, आपको बहुत ज्यादा धैर्य रखना पड़ेगा. what? Okay. Is that your Patience is father? called धैर्य. No, it's Gaurav Prabhuji. Okay. Gaurav. Yes, Prabhuji. Thank you, God. I appreciate. So it is life. Sometimes you don't get a perfect marriage, husband or the wife. As long as the wife is chaste, the husband will tolerate the wife. As long as the husband is not nonsense, the wife will tolerate the husband. And prayers will bring them close and close. You see, and you work for and Krishna will bring you to a situation that you can prosper and you can be, satisfied in the situation. You change the heart of the husband and the wife, whatever it may be. Okay, and then we're gonna go to the next thing to change their heart. Go for it, Mata. तो yes प्रभुजी. तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बहुत अच्छा पति ही मिले जो कि भक्त हो, या फिर आपको बहुत अच्छी पत्नी मिले जो कि भक्त हो. तो सिचुएशन जो है वो उल्टी भी हो सकती है. तो आपको धैर्य तो रखना ही है, उसके साथ साथ आप प्रे करते रहिए, ताकि जो भी, अगर आपको एक पति मिला है जो कि अच्छा नहीं है, पत्नी मिली है जो कि अच्छी नहीं है, जो कि भक्त नहीं है, जो कि नॉनसेंस कुछ काम कर रहे हैं, जो भी, तो आप प्रे करते रहिए उनके लिए, हमेशा प्रे कीजिए. तो कृष्णा जो है आपकी हेल्प जरूर करेंगे. एंड Because we have a wonderful thing. We have Krishna as Paramatma in the heart of all living entities. तो जो कृष्णा है वो परमात्मा के तरह हम सब के हृदय में बसे हुए हैं. And we should use that manifestation of the Lord. You see, he's in the heart of the husband. He's in the heart of the wife. There's a connection in there. Krishna is there between both of you. You use that connection. You talk to Paramatma. You talk to Krishna. Please go in the heart of my husband. Please go in the heart of my wife. And you don't get immediate result, but you do get some result. That's true. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जो कृष्णा है, क्योंकि वो परमात्मा है, तो परमात्मा तो सबके हृदय में बसते हैं. तो जो परमात्मा है वो आपके पति के हृदय में भी है, पत्नी के हृदय में भी है. तो आप प्रे कर सकते हैं, जो कि परमात्मा आपके हृदय में है, आप उनसे प्रे कर सकते हैं कि कृपा कि प्लीज आप मेरे पति के हार्ट में या फिर पत्नी के हार्ट में प्लीज एंटर कीजिए. और इससे आपको
इमीडिएट रिजल्ट मतलब एकदम से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा। Okay. So any more question and we can close this for tonight. I want to keep the time, otherwise people complain. I get bad review. किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी, प्रियंका झा हैज वन मोर क्वेश्चन। प्रियंका झा, She gonna say or she gonna write? yes, she's speaking. She has unmuted herself. Yes, Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Am I Are audible? you? Let me put you in here. Let me see. What is the name? Priyanka Jha. Priyanka Jha. Well, I don't see you here. Isha. Hare Krishna Prabhuji. Okay, tell me. Oh, thank you, Yeah. Mata. Hare Thank Krishna you, Prabhuji, Gaurav. Dandavat Pranam. Saurabh. Yeah, Prabhuji, in this age of Kali Yuga, we see that women are nowadays, the women are nowadays very, very highly qualified. And there are parent expectations also that women should continue working despite even after getting married also. And I'm not sure about what devotee men expect their wife, but expect from their wife. But many men in this material world, they expect their wife to continue working. Um, Along with balancing the material responsibilities. So, how feasible do you think that nowadays a woman should become a housewife? Should they become a housewife only if they are married to the devotee husband, or because it is better to become a housewife only if they are married to devotee husband? That is what I feel. I don't know to what extent this is okay. So how feasible do you think that in this age of Kali Yuga, women should become a housewife? Okay. This women become a housewife. Actually, we're gonna go back to the point of the class. She's becoming a CEO of the house. She is running an enterprise, because become a housewife is not just enough. You have to become a CEO, because there's many things that you have to do to maintain a house. Now, and I'm gonna give you, like, if you go to the translation, I think we're gonna lose. I'm gonna just, you give it the gist, okay? Yes, Prabhuji, I'm hearing. Okay, so you each, are you married now, Mata, Priyanka? Okay. Yes, it's better if you marry a devotee. I can tell from personal experience. It's better if you marry a devotee, because then you have something common. It's more easy to progress the marriage from that point. Okay, otherwise it's too much work and a lot of things you have to do before you get to the point of a marriage that's prospering. So you have to, yeah, look for a devotee, and then you have to have your expectations. Jayapataka Maharaj, first thing he does, he said, you write your expectation, he writes his expectations, because sometimes people marry and they say after the marriage, oh, I didn't want a children. Well, I want 5 children. You see, that they expect one thing and then it's another thing. You see, and but I didn't want to leave my job. Well, I thought to stay at home and cook. You see, that it's you should first, before the marriage, of course, you go through a process, and you have your, how do you call, your astrology done properly. You father, mother involved, everything. So then you have the expectation. What does he expect and what you expect? And then you put together and you see, so there is no surprise. So if you do that, you already has in the path, of a good, how do you call, a good, a happy position in there, you see?
you better off the people that don't do all these things. You see, now, wherever you're going to be working or in the house, CEO, or he's going to be in the house, CEO, this is how you talk to your partner, and with mutual respect, and chalk out the future for both of you. You get to some conclusion, and you work on that. You see, and you take the position. You see, because it doesn't have to be the wife just doing the house thing. Sometimes the wife do the house plus she do the business, and I don't know what the husband does, but but maybe does some business too. I don't know, but she's good enough to do both things. So each couple is a universe that then you, by your own wisdom and by your by your counselor, by your advanced devotees, you get to a conclusion how this should be for you and work for you. Okay. ओके सो प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर आप एक भक्त से विवाह करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि अगर आप भक्त से विवाह करेंगे तो जयपताका महाराज जो है वो ये कहते हैं कि जो भी जिनको भी आप पसंद करते हो या जिनको भी आपकी फैमिली ने आपके लिए देख रखा है, तो आप सबसे पहला जो कार्य आपको करना है वो ये है कि आप उनके साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है, आपकी एक्सपेक्टेशंस और उनकी एक्सपेक्टेशंस, तो दोनों की एक्सपेक्टेशंस को आपको सामने रख करके कि हाँ मुझे शादी के बाद ऐसा चाहिए और उनको शादी के बाद ऐसा चाहिए, क्योंकि फिर शादी के बाद कोई ऐसा सरप्राइज नहीं रहेगा कि आप दोनों में कोई ऐसी नोकझोंक भी नहीं रहेगी। तो आप दोनों बहुत अच्छे से उस चीज को जो भी आपका गोल होगा, मतलब कि जो कि शादी का, उस पर आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे और कोई भी ऐसी परेशानी आपको नहीं होगी। एंड ये भी फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आप सीईओ हो घर के या फिर आपके पति सीईओ घर के हैं, तो जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट से चलना चाहिए और एक अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए दोनों में, तभी ये एंटरप्राइज जो है वो ग्रो हो पाएगी। यस एंड प्रभु जी, व्हाट डिड यू से आफ्टर दैट husband and wife, it doesn't matter that if among both of them anybody is CEO, it doesn't matter, it only depends upon mutual respect and good partnership, right? Yes, mutual what- respect and partnership. And then Yes. sometimes the man likes to stay home. He takes care of the babies. It depends how you work the partnership. And that's by mutual agreement, not by artificially putting, you stay here and that's the spoon, go and cook in the pot, and like that. It has to be by mutual respect and agreement, because nobody Yes. likes to be pushed around anymore. You see, this is in this Kali Yuga, it's too much pushing around. Everybody's pushing everybody around. So by mutual respect, it gives energy to the couple to be progressive, to be prosper. Okay. Yes. तो इस So, अगर ये भी हो सकता है, यस प्रभु जी, Priyanka, Mata, okay. Yes, Prabhuji, thank you so much. Go ahead. Prabhat. Prabhjot. Prabhat. No, it's all right, Prabhuji. It's all right. I know it's a difficult name, Punjabi name actually. ओके सो प्रभु जी कह रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि अगर चाहे प्रभु जी जो पुरुष हैं, अगर वो घर पे रहकर बच्चों को संभालना चाहते हैं या फिर स्त्री घर पे रहकर बच्चों को संभालना चाहते हैं, जो पूरा रिलेशनशिप है वो किस पे टिका होना चाहिए? म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे, सम्मान पे और अच्छी पार्टनरशिप पे टिका होना चाहिए, तो वो अच्छे से प्रॉस्पर कर पाएगा और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। That's it, Prabhuji. So, in other words, to finalize, a relationship, because you cannot talk about human CEO without talk about the relationship with the husband and then the relationship in the house. So the marital relationship is hard work. It doesn't stay without work, and the women should work and the man should work. It doesn't come automatically. You have to ponder, meditate. You have to philosophically understand certain things, tolerate,
and you move forward, and then you get more and more, in a position that husband and wife understand each other. They are in the position, and the marriage becomes very successful, become very prosper, and because Krishna is very pleased with that. You have to see the hard work. Krishna wants to see the hard work, because not only you work in the marriage, you work in yourself as a devotee, and she works on herself as a devotee. You see, and both of you work, and both of you as a devotee. It's another thing going there. You see, and that's a beautiful thing, because in the relationship we can see a lot of things in ourselves. We can learn a lot. You see, sometimes the partner that we are with, it's like a mirror. He shows us a little bit of ourselves, and we show her a little bit of herself when she sees in the mirror, in the man, and the man sees the mirror in the woman. We're learning from each other in that sense, in devotion, and things that we didn't know about us, we know now. You see, and we make progress. Okay? Yes. So प्रभु जी कह रहे हैं कि जो एक रिलेशनशिप है, एक पति और पत्नी का जो रिलेशनशिप है, वो ऐसे नहीं वर्क करेगा कि एक वर्क कर रहा है और दूसरा वर्क नहीं कर रहा है. उसके लिए दोनों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा. दोनों को ही अपनी साइड से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो ही ये रिलेशनशिप आगे ग्रो हो सकता है. क्योंकि अगर एक ही करेगा तो दूसरा नहीं करेगा, तो उससे बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट होंगी. तो दोनों को मिलके हार्ड वर्क करना पड़ेगा. और कृष्णा देखते हैं कि कितना हार्ड वर्क हो रहा है. जो पत्नी है वो अपनी भक्ति के अनुसार और एक भक्त होते हुए सब एफर्ट्स डाल रही हैं, और सेम जो पति है वो भी एक भक्त होते हुए, भक्ति करते हुए सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं. तो दोनों मिलके एक दूसरे को जो है हेल्प कर रहे हैं. और जब वो एक दूसरे को आईने में भी देखते हैं, तो फिर थोड़े जो पति है, जो थोड़े उसमें गुण है, तो वो देखते हैं उनकी पत्नी में, उनके अंदर जो है उनकी पत्नी के भी हैं. सेम पत्नी भी देखती है, तो पत्नी के भी अंदर पति के गुण होते हैं थोड़े बहुत. तो ऐसे जो है वो दोनों मिल करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. तो ऐसे उनकी जो है सक्सेसफुल एक मैरिज लाइफ हो सकती है. एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे के लिए हार्ड वर्क करके, एंड देन फिर रिलेशनशिप वर्क करेगा. Okay, thank you. So I think we went over a little bit, but thank you for your questions. And with the permission of, first I want to thank our Prabjot. This is Prabjot. Yes, Is that correct? Yes, Prabhuji, it's correct. Yes. Do please forgive me. I did my No, name no. I cannot pronounce properly. Mrs. No. Prabjot. It's just remember the Prabhu name, Prabjot. Okay. Yes, Prabhuji. Thank you Even so my much. friends call me Prabhu. Prabhu, huh? Can I call you Yes. Prabhu? Yes. Thank Prabhuji. you. You made me a friend today. Thank you, Mrs. Prabhu. That's Yes, why people Prabhuji. call me Bhagi, My name is Bhagavatamrta. It's very long. So it's okay. It doesn't matter. Yes, It's a condensed version of us. So thank you so much for your, this wonderful translation here. I know it's hard, but you did good. And today you're smiling most of the time, so this is good. Yes, Prabhuji. It's all your mercy, and I'm trying also a little, but it's all your mercy. I just didn't know that I'll be able to do, because I was not well also. I was thinking that I won't be able to do, but it's all your blessings, Mataji's mercy, everybody. Yeah. Even She insisted. Gaurav No, you Prabhuji should helped. do it, she said, right? She should do it. Yes. Yeah, she's all for you. Prabhuji. Thank you, Mata. Thank you so much.